All right, so we're gonna progress with our lesson. Iman हमारे पास नहीं आएगी. So what can we do? We cannot stop, so we will continue. So after we do the extrinsic intrinsic motivation, all right. Please remember, ये अभी तक behavioral वाला चल रहा है. It's behavioral, right? So now, like, does intrinsic motivation matter? Yeah, extrinsic motivation matter, right? So there's this research taken. It's not part of your official syllabus. ये कोई side research है. So you can quote this अगर कोई debate वाले question के अंदर आता है that intrinsic motivation is effective for workers. Yeah, extrinsic motivation is effective for workers. So Kovacs did his study in 1995, right? And basically he wanted to know कि मैनेजर्स के हिसाब से सबसे ज़्यादा मोटिवेटिंग फोर्स एम्प्लॉयज़ के लिए क्या होगा एंड एम्प्लॉयज़ से भी पूछता है कि सबसे ज़्यादा मोटिवेटिंग फोर्स आपके लिए क्या होता है तो मैनेजर्स क्या सोचते हैं एंड एम्प्लॉयज़ क्या सोचते हैं तुम्हें वाजह फ़र्क नज़र आ जाएगा सो कोवैश गोज टू मैनेजर्स एंड मेक्स देम फिल आउट अ सर्वे फॉर्म ठीक है एंड ही आस्क्स देम कि भाई टॉप 5 मोटिवेटिंग फैक्टर्स बताओ जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे एम्प्लॉइज मोटिवेट जिससे होते हैं सो मैनेजर्स राइट देयर टॉप 5 एंड लुक एट द रिजल्ट्स दैट मैनेजर्स कहते हैं managers think that the most motivating force for their employee is good wages. Now, good wages would come under the external motivation factor. अब ये वही सवाल same questions asked to the workers. Workers top 5 motivation force allow and worker के हिसाब से the most motivating force is interesting work and good wages is at the bottom of the list. Managers के हिसाब से interesting work is at the bottom of the list. So this research goes to show you how differently managers think what employee wants, and this again employees or manager के बीच में जो gap होता है this experiment या this study shows it perfectly. So uh, regarding the application of external and internal reward, right? You can use this study to quote that according to Kovach's study, right? Interesting work is was much more valued as per results of this study. So interesting work should have been yeah should be there in the क्या कहते हैं jobs that people perform, the tasks that people perform. ठीक है ना? It is not the good wages that people prioritize, especially the people who do the job. So you can use Kovach's study as an evidence of application. Interesting work भी कोई ना कोई चीज होती है. It's not all about money. All right. So that being said, we then come on to another experiment. Tina, and it's type of reward system. अभी दूसरा जो part है, I don't know मैंने इसकी heading क्यों नहीं लिखा. Type of reward system नाम है इसका. Type of reward systems. All right. So basically now we're gonna primarily be talking about इसके अंदर external rewards, right? External क्या कहते हैं external motivators. And external motivators को देने के बहुत सारे systems होते हैं. There's so many ways you can distribute them. And this is what this section is about, type of reward systems. First one is simple. ठीक है ना जितना ज़्यादा टास्क करोगे उतना ज़्यादा तुम्हें पैसे मिलेंगे, right? अगर तुमने ज़्यादा टास्क किया इन अंडर अ मिनट या इन अ मंथ तो मैं उसके हिसाब से ज़्यादा पैसे मिलेंगे सो जितना ज़्यादा काम करोगे उतना ज़्यादा पैसे मिलेंगे सो दैट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड दैट इज़ व्हाट बेसिक सैलरी इज़ पे जो तुम्हें काम मिलता है उसकी तनख्वाह मिलती है ज़्यादा काम करोगे ज़्यादा तनख्वाह मिलेगी सो दैट्स वन स्टैंडर्ड बट देयर आर अदर मेथड्स एज वेल पे के अलावा देयर आर बोनसेस एज वेल बोनसेस आर डिफरेंट देन पेस सी पे इज गारंटीड पे तो तुम्हारा बेसिक है राइट वो तो मिलेगा ही मिलेगा एट द एंड ऑफ द मंथ बोनसेस आर नॉट प्रॉमिस्ड राइट बोनसेस का कच्चा पक्का होता है वेदर मिलेगा या नहीं मिलेगा बट बोनसेस एक्चुअली मिलता है आपके साल के एंड में व्हेन द कंपनी एक्चुअली reviews your performance right कि साल के अंदर आपने कैसे परफॉर्म किया when they're evaluating your performance so bonuses is a external motivator, but it's not part of the salary. It's additional amount that is given on top of salary, and it's based on your performance in that evaluation period. So that's bonuses. So you may heard of phrases like Christmas bonus, your 10% bonus, things like that. So ये साल का हमेशा end में आता है. Third is performance related pay. This is different than the standard pay that you have. सी परफॉर्मेंस रिलेटेड पे क्या होता है कि इसके अंदर यू हैव टू मीट अ टारगेट राइट
So you meet a target, then you get your money. ठीक है. So let's suppose कि कंपनी के अंदर agreement होती है कि you have to do these 4 tasks. उसके बाद तुम्हें तुम्हारी सैलरी मिलेगी जो बेसिक सैलरी है. If you don't do this task, ठीक है ना, you would not qualify for salary. ठीक है. So to get the basic amount, you need to do this task. ठीक है. Now there could be a possibility कि तुम 4 से ज़्यादा कर लो, फिर क्या होगा? Like, will it get counted? Yeah, will it not get counted? So performance related पे के अंदर क्या होता है? तुम्हारा जो टारगेट सेट होता है वो अकॉम्प्लिश कर लोगे, तुम्हें पे मिलेगा. लेकिन जब उससे ज़्यादा करोगे ना, फॉर एग्जाम्पल यू डू एडिशनल टास्क एज वेल, अपना बेसिक टास्क करने के बाद, सो एडिशनल टास्क करने पे यू विल गेट मोर मनी. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4 करने के लिए आपको मिला था, अब बाकी कब मिलेगा? लेट्स सपोज हो सकता है कि 4 नहीं करने पड़ेंगे, यहाँ पे कम करने पड़ेंगे. सो द एडिशनल टास्क दैट यू हैव टू डू इज काइंड क्या कहते हैं, there's a different criteria for that reward. तो it's not 4 टास्क पे एक पे मिलेगी, फिर दोबारा 4 टास्क पे एक और पे मिलेगी. हो सकता है 4 टास्क पे आपका बेसिक पे मिलेगा और एक और टास्क पे आपको एडिशनल बोनस मिलेगा. सो whatever you do above your task, ठीक है ना, आपको उसके अलग हिसाब से पैसे मिलेंगे और वो पैसे ज़्यादा बनते हैं. ठीक है. सो दैट्स परफॉर्मेंस रिलेटेड पे. अब क्या होता है कि ये ज़्यादातर you can assign this sort of procedure of payment in a group setting या individual setting. जैसे सिर्फ, so ज़्यादातर लोग group setting में करते हैं. For example, there are 4 people in the group, right? And company ने उस group को बोला हुआ कि भाई, at the end of this month I want your group to make 4 sales. मुझे नहीं पता इस ग्रुप ने एंड महीने का आखिर में 4 चीज़ें सेल करनी है. ठीक है. So that's your task. And let's suppose as a group you collectively manage to sell those 4 things. So तुम्हें साल के एंड में उस ग्रुप वालों को तनख्वाह तो मिलेगी. बट फर्स्ट करो महीने का आखिर में उन्होंने 6 सेल किए. सो जो 6 सेल किए होंगे, राइट, वेदर तुमने सेल किया, तुम्हारे टीम मेंबर ने सेल किया, डजेंट मैटर. Everyone in that group will get a reward, भले तुमने किया या नहीं किया, because it was a group effort that got you there. So इससे क्या होता है, कभी कभार इससे ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है. क्योंकि अगर कोई काम नहीं करेगा, किसी को पैसे नहीं मिलेंगे. सब काम करेंगे तो सबको पैसे मिलेंगे. सो पीपल एक्चुअली केयर फॉर देयर टास्क. ठीक है. पीपल एक्चुअली टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर टास्क. सो इट एक्चुअली मेक्स पीपल मोर प्रोडक्टिव एज वेल. ग्रुप बेसिस पे ज़्यादा इफेक्टिव होता है बिकॉज इट इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो दैट्स अनदर मेथड दैट यू कैन यूज. लेकिन ये भी अगेन एक्सटर्नल मोटिवेटिंग फैक्टर्स के अंदर आता है. ये क्लियर है परफॉर्मेंस रिलेटेड पे? ऑलराइट. नाउ द लास्ट वन, फोर्थ. सिर्फ 4 है इसके अंदर, तो चौथा जो सबसे आखिरी वाला है, दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग. नाम से पता चल रहा है क्या होगा. सो इज डिफरेंट देन ऑल द अदर्स. ठीक है. प्रॉफिट शेयरिंग के अंदर, लेट्स सपोज यू आर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, राइट, एंड यू हियर कि भाई कंपनी जो है ना बहुत ज़्यादा पैसे कमा रही है इस साल. लेट्स सपोज यू आर वर्किंग इन अ कंपनी जिसने जूम एप्लीकेशन बनाया, जो जूम जिसके ऊपर हम मीटिंग कर रहे हैं. You know, because of COVID, Zoom application popularity and demand has risen. Many people are downloading it. Many people are using it every single day. So Zoom has made significant profit. Now, knowing that you work for Zoom, you would know that your company that you're working for has made so much money. Now, a company can a company can choose to distribute the profit to its people, to the employee as well. अब ये it's not compulsory that the company distributed, लेकिन as a gesture of goodwill, as a gesture of क्या कहते हैं appreciation to its employees, it can also distribute the profit to the workers as well. Let's suppose the company makes 300 millions in sales. So let's suppose the CEO gets like 2 million and 100 million is distributed to the employees. So employees get some part of the profit as well. Now, again, ये performance rate पे नहीं है क्योंकि again ये जो profit sharing जो है, ठीक है ना, this is something that is not related to their salaries, right? It is only given to employees when the entire company makes so much profit, फिर ये profit sharing के base पे जा सकते हैं. So it's like
including people in profit, like giving profit to the people as well, to make them understand if you, because you are also important as well. You're not neglected. You are also remembered. Your contributions also remembered. So here you go. Like have some part of the profit. So इससे क्या होता है? The employees feel as if they're part of the company. So belongingness वाली sense बढ़ जाती है. And also next time, maybe in the next year, the employees will work more harder as well. कि यार देखो company is taking care of us now, profit there is. So we will also take care of the company, and we will also work more hard. So it does this factor as well. So that's profit sharing, and that's the all four types of क्या कहते हैं, types of reward system that you can have in a company. So when you look at this, right, does it even work or not? So there are evidences कि कुछ कुछ ये चीज़ें काम करती हैं. For example, yeah, they did study 97 and bonus वाला जो system था, ये वाला, ये एक चाइनीज फैक्ट्री के अंदर लगा है. एंड पता चला कि इफ उस इंडस्ट्री के अंदर जो क्या कहते हैं प्रोडक्टिविटी या ग्रोथ थी, राइट, इंक्रीज 50%, क्योंकि सिर्फ वहाँ पे बोनसेस लोग को दिए गए. सो बोनसेस डू वर्क, particular for like Chinese state industries. All right, now it doesn't always work. So Bloom in 1999 did a study on baseball teams. Baseball team के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, right? A popular player in the baseball team will get a high salary, and जो like new player होते हैं और the people who don't know, उनको बहुत कम मिलती है. भले वो 10 साल से खेल रहे हैं, उनको बहुत कम मिलेगी. So होता क्या है कि Bloom had found out that कुछ baseball teams जो है ना, ज़्यादा टीमों से बहुत ज़्यादा गेम्स हारते हैं. मतलब not every team can win every game, but some teams lose the most amount of games. तो पता चलता है the team that loses the most game is the one जहाँ पे जो wage gap सबसे ज़्यादा है, as in जहाँ पे सबसे कम तनख्वाह और सबसे ज़्यादा तनख्वाह का जो गैप जहाँ पे ज़्यादा होगा, उस टीम के अंदर सबसे ज़्यादा लॉसेस होंगे, वो टीम ज़्यादा हारती है. सो ब्लूम्स फाइंडिंग कैन बी अप्लाइड टू योर कंपनीज एज वेल, जहाँ पे पे की बात करें. तो जहाँ पे पे गैप ज़्यादा होगा, एज इन द हाइस्ट पेड पर्सन इन द कंपनी का, लाइक कोई बहुत ज़्यादा तनख्वाह इन द लोएस्ट पेड के दरमियान बहुत ज़्यादा गैप होगा, वहाँ पे काम नहीं करेगी. एक्चुअली इसका बैक फायर. सो ब्लूम्स एविडेंस कैन बी टेकन एज पे विल नॉट वर्क. और ये दो रिसर्चेज हैं, एक इनकी है कबीर और इसकी, एंड इसकी है, राइट. एंड इन दोनों का एक ही कंक्लूजन है कि राइट, pay and like bonus and pay for performance don't affect companies productivity. So those two people say कि ये सब जो चीजें हैं, ठीक है ना, they don't increase productivity in the companies that they have studied. So they found no evidence that it is actually helpful. So it is again an evidence against. Supporting evidence के अंदर जो pay for performance है, right, ये वाला. सो हॉलवेल ने रिसर्च की थी एंड फाउंड आउट कि जो सीनियर मैनेजर्स को अगर तुम इस तरीके से पे करोगे, राइट, सो इससे क्या होगा कि कंपनी का जो मार्केट परसेंटेज होता है स्टॉक मार्केट के अंदर, बेसिकली आपकी कंपनी ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगी कंपेयर टू अदर कंपनीज हु आर सेलिंग द सेम थिंग, इफ योर सीनियर मैनेजर्स आर पेड अकॉर्डिंग टू दिस. क्योंकि senior managers then will perform more tasks additionally, and it's going to benefit them, and it's also going to benefit your company. So senior managers के लिए ये करोगे, so the chances are your company will perform better than the other company and will capture more percentage of the market. भारत, लेकिन वन कंसर्न हमेशा ये रहता है, ठीक है ना, दिस ओनली वर्क्स जहाँ पे प्रॉफिट इज द एंड गोल, लाइक बैंकिंग, लाइक जो लाइक क्या कहते हैं, लाइक फूड इंडस्ट्री, लाइक फैशन इंडस्ट्री, क्या कहते हैं तुम्हारा जो है लाइक टेलीविजन मीडिया, जहाँ पे प्रॉफिट चाहिए होता है. पीपल हु डोंट वर्क फॉर प्रॉफिट, उनके लिए ये सब चीज़ें मैटर नहीं करेंगे, क्योंकि उनके लिए फिर बोनस मैटर नहीं करेगा, प्रॉफिट बेस्ड मैटर नहीं करेगा. पीपल हु वर्क फॉर सोशल कॉजेस, जो जैसे एनजीओ चला रहे होते हैं, राइट, नॉन फॉर प्रॉफिट, उनके लिए शायद ये चीज़ें मोटिवेट कर ही ना. सो इट ओनली वर्क्स वेल इन प्रॉफिट ड्रिवन सेक्टर. सबसे बड़े लिमिटिंग फैक्टर ये होता है इन सब चीज़ों का. एंड ऑल्सो यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये होता है कि ठीक है,
तुम जिस बेस पे लोगों को पे करते हो, ये टास्क है राइट, ये टास्क जो है सारे के सारे ये टास्क हैं, अगर ये लोगों को सही से नहीं मालूम, एग्जैक्टली नहीं मालूम, सही से डिफाइन नहीं हुए हुए, वेग डिस्क्रिप्शन हुए हुए, या आधा बताया हुआ है, कंप्लीटली नहीं बताया हुआ, there is no way people can complete their task, and there is no way then people will get paid, and there is no way your company's productivity will increase. So you have to define your task very, very, very clearly. Agar you leave out some information, or if the people don't understand it, nobody wins. So it's very difficult to make sure that everyone understands their jobs perfectly clearly. क्योंकि होता है कभी कभार कि कुछ कोई ना कोई इंसान लाइक एक चीज़ छोड़ देता है, ये एक चीज़ तो नहीं होती है, एंड देन यू आस्क हिम कि क्यों नहीं हुआ, ही वुड से कि मुझे पता नहीं था ये करना है. सो ये क्राइटेरिया बहुत डिफिकल्ट होता है मीट करने के लिए, बिकॉज एवरी वन अंडरस्टैंड देयर स्टफ इन देयर ओन वे. सो भारत, so these two are the challenges for types of reward system. These two are evidences through research कि ये काम नहीं करते, and these two are evidence कि ये काम करते हैं. सो अगेन समरी के अंदर क्या होता है कि ऑल दिस फोर रिवॉर्ड सिस्टम के बारे में तुम्हारा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देनी है कि व्हाट इज पे, व्हाट इज बोनस, व्हाट इज प्रॉफिट शेयरिंग, एंड व्हाट इज परफॉर्मेंस रिलेटेड पे. दैट्स इट, ठीक है ना. लाइक ये फिर भी बहुत बड़ा लिखा हुआ है, बट अगर तुम इसे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना चाहो, ठीक है ना, दैट यू कैन. एंड इफ यू वर टू इवेल्युएट देम, ठीक है, हम क्या बोलेंगे, इज इट एप्लीकेबल, इट इज़ एप्लीकेबल. एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल होगा कि क्योंकि these researches show that it is applicable. Are these cost effective? Well, cost effective तो नहीं होगा, क्योंकि कंपनी को एट द एंड ऑफ द डे, फॉर एग्जांपल परफॉर्मेंस रेट पे के अंदर ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे एम्प्लॉय का, अगर उन्हें एडिशनल टास्क अकम्प्लिश करने पड़ गए. बोनसेस के अंदर भी आप लोगों को ज़्यादा पैसे दे रहे हो, more than you promised. Same for profit sharing as well. So this is not going to be a cost-effective way to reward your employees. There has to be another way to reward your employees. लेकिन यहाँ पे नहीं है. यहाँ पे जो भी method choose करो, employees, the company is going to lose money. क्योंकि it's going to reward employees through money. So it's not cost-effective. Other than that, ठीक है ना. Uh, और क्या हो सकता है cost effectiveness? Um, नेचर नर्चर यहाँ पे अप्लाई नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे अप्लाई नहीं होता, ठीक है ना. इंडिविजुअल और सिचुएशनल, ठीक है. यहाँ पे आई गेस यू कैन से बोथ, क्योंकि व्हाट टाइप ऑफ रिवॉर्ड सिस्टम दे प्रेफर वुड कम डाउन टू द इंडिविजुअल. क्या पता किसी को ये अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी राइट, पे हमेशा मिलती है व्हेन यू गेट योर जॉब डन. किसी को जो है परफॉर्मेंस रेटेड पे पसंद नहीं आएगी, क्योंकि परफॉर्मेंस रेटेड पे के अंदर इट्स नॉट ऑलवेज सिक्योर कि तुम्हें पैसे मिलेंगे. हमेशा पैसे जो है परफॉर्मेंस को बेस्ड होती है, तो कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, 50-50 होता है. सो देयर कुड बी प्रेफरेंस अमंग पीपल कि वो कौन सा सिस्टम अप्रिशिएट करें. इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ सकते हैं. ऑल्सो द टाइप ऑफ कंपनी दे वर्क इन, वो भी डिक्टेट कर सकता है कि व्हाट टाइप ऑफ रिवॉर्ड सिस्टम एग्जिस्ट. फॉर एग्जांपल कमीशन बेस्ड जॉब्स होते हैं, वहाँ पे शायद ये एग्जिस्ट करेगा, एंड जो नॉर्मल जॉब्स होते हैं 9 to 5, वहाँ पे शायद ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है. या फैक्ट्री वर्कर्स के लिए ये एग्जिस्ट करेगा. जो सेल वाली जॉब होती है, सेल वाली, शायद उनके लिए ये एग्जिस्ट करेगा. सो डिफरेंट इंडस्ट्रीज के डिफरेंट रिवॉर्ड सिस्टम्स होंगे. सो दैट इज अ सिचुएशनल वेरिएबल एज वेल. सो इट्स बोथ इंडिविजुअल सिचुएशनल. Is it reductionist? Well, in my view, it is reductionist, because even though there are four types of reward system, they're all focusing on how to distribute external motivators, right? They're not neglecting the internal motivators part. They're neglecting the person's cognition. They're neglecting the person's need, क्योंकि यहाँ पे बस पैसे के ऊपर या external reward system के ऊपर काम करें, बाकी सब चीज़ हमने side पे डाल दी. So in my view, is reductionist. So we have application, individual, situational. We have like reductionism, and I would say यहाँ पे culture bias concept शायद applicable नहीं हुआ, क्योंकि like you know like यहाँ पे ज़्यादातर instead of culture, यहाँ पे culture के base पे I don't think it's gonna differ. ज़्यादातर industries के base पे differ होगा. So there's no concept culture bias over here. Anyways, so that's the type of reward system that you have. कभी कभार, for example, you have this question, a high level pay
is the only motivator any worker needs? This is a debate question, right? Whether you can agree or disagree. इसके अंदर तुम कोवाश का रिसर्च डाल सकती हो एज ए आर्ग्यूमेंट पॉइंट, ठीक है ना, अगेंस्ट के लिए। आ, इसके लिए तुम इन दोनों के रिसर्च डाल सकती हो एज एन अगेंस्ट पॉइंट, ठीक है ना। और फोर के अंदर ये दोनों रिसर्चेस के पॉइंट डाल सकते हो कि नहीं, if you give people more money they will work. So again, it can go both ways, but you have points to like complete this debate using these points over here and Kovacs research. All right, discuss the advantages and disadvantages of different types of reward system used to motivate employees. You all right. So like we have to talk about the advantage and disadvantages. The disadvantage could be that again, at the end of the day, you're rewarding people, right? So many people may prefer different type of reward system. So like you cannot make people, you cannot make everyone happy, right? Number two, हो सकता है कि क्योंकि यहाँ पे again you're distributing extrinsic motivators, and यहाँ पे you're neglecting intrinsic motivators. So using Kovach's research, you can argue that people, this reward system will not work for people who don't find their jobs interesting, because according to Kovach's research, good wage don't matter, interesting work matters according to workers. So this neglects intrinsic motivation. The advantages of it is number one, it is effective in profit-based sector. जैसे using this research you can highlight कि भाई काम करता है, so it is applicable, it is advantageous because it works. All right, उसके अलावा you can say कि this also works to kind of satisfy people according to Maslow की hierarchy की need, क्योंकि like if we are paying people, right, so हो सकता है कि we might be catering to different needs of that hierarchy in many different ways. मतलब ज़्यादा पैसे होंगे तो ज़्यादा फिजियोलॉजिकल नीड बढ़ेगी, क्यों नीड फुलफिल होगी, क्योंकि ज़्यादा खा सकता है, ज़्यादा आराम से रह सकता है। ज़्यादा पैसे दोगे तो शायद उसको क्या कहते हैं, ज़्यादा उसकी सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी, क्योंकि अगेन some people may relate their self esteem to the money they get. अगर ज़्यादा पैसे दोगे तो क्या पता सेल्फ एक्चुअलाइजिंग की तरफ चल जा सकता है, क्योंकि they can learn skills which are expensive to learn, and using that money they can get better. uh, क्या कर अगर ज़्यादा पैसे दोगे तो मे बी दे कैन बिल्ड अ सिक्योर लाइफ स्टाइल फॉर themselves, get a good house in a secure neighborhood. Yeah, like if you give them more money they could like do something to make their future secure, the safety need be fulfilled सकती है. So like by using this system you can kind of fulfill different needs of people uh, according to Maslow's hierarchy, so that could be an advantage. यहाँ तक कोई मसला क्वेश्चन? How is this relevant to intrinsic motivation? It is not. ये तो है, it is not relevant. देखो, it's not relevant to intrinsic motivation by itself. Itself नहीं है. अगर टाइप ऑफ रिवॉर्ड सिस्टम का ये जो तीन स्लाइड उठा के देखो, ये नहीं है. लेकिन क्योंकि अब ये सेक्शन जो है, this section that we're discussing, right? यहाँ पे is a combination of three theories या three researches या concepts as well. जैसे cognitive के अंदर रूम की थ्योरी थी, गोल सेटिंग थ्योरी थी, एंड equity की थ्योरी थी. यहाँ पे भी what we're gonna look at this theory type of motivators. उससे पहले जो intrinsic external motivation की definition वाली theory वो देखेंगे, and इसके बाद वाली theory देखेंगे. So like even though we're talking about type of reward system, we cannot ignore the other researches that come in this section as well. क्योंकि CI क्या करता है, they don't take uh, researches alone. They consider in the entire section when they talk about a particular research. तो भले तुम इसकी बात कर रहोगे, right? At the back of your mind, you can discuss uh, this theory and this theory जो अभी हम करेंगे with this type of reward system when you are using a debate question, या when you're using advantages disadvantages, जहाँ पे तुम्हें compare and contrast करना, तो वहाँ पे you can refer to other क्या कहते हैं theories in the section particularly. So that's how CIE kind of frames this answer. For example, uh,
लाइक ये गोल सेटिंग राइट, यहाँ पे अगर तुम्हें एडवांटेज डिसएडवांटेज या डिबेट लिखना पड़े कि भाई गोल क्लियर गोल्स आर ऑल व्हाट पीपल नीड to get motivated, you can use this theory as well. You can use this theory as well to create your argument as well. So you can refer to things that are within a particular section. uh, I know it is confusing. ये एबनॉर्मल साइकोलॉजी में आसान था, क्योंकि लाइक एबनॉर्मल साइकोलॉजी के अंदर अगर तुम्हें कुछ याद होगा ना, तो हम कॉजेस ना एक्सप्लेनेशन कर रहे थे कि डिप्रेशन की डिफरेंट थ्योरीज थी राइट। तो वहाँ पे वी कैन कंपेयर वन डिप्रेशन की थ्योरी विद अनदर डिप्रेशन की थ्योरी, क्योंकि वो इंटायर सेक्शन था वाई डज डिप्रेशन हैपन का पूरा सेक्शन था एंड तीन एक्सप्लेनेशन थी। तो वहाँ पे क्योंकि एक थ्योरी को दूसरे थ्योरी कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पे भी यही सीन है। फर्क क्या है कि यहाँ पे सेक्शन जो है ना तुम्हारे कॉजेज एंड ट्रीटमेंट के नहीं है, तुम्हारा सेक्शन यहाँ पे नीड थ्योरी वाला पूरा सेक्शन है, देन कॉग्निटिव वाला पूरा सेक्शन है, देन ये थर्ड सेक्शन बिहेवियर वाला सेक्शन है। तो इस तरीके से उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। सो क्या कहते थे, what were we discussing? Yeah. So the last theory, ठीक है, is non-monetary rewards. Rewards that you can give that don't consist of money. क्योंकि type of reward system में सारा पैसों का आ रहा है. Are there rewards that are there but don't involve money? Yes. तुम्हारे सिलेबस के अंदर ये पांच है: respect, recognition, empowerment, praise, and sense of belonging. These are five types of rewards that don't involve money. ठीक है, non-monetary. And what you're required to know is what are these five rewards, basic descriptions. ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, and their basic advantages and their disadvantages. So again, uh, according to CIE, तो आज जो बुक के अंदर लिखा हो, praise is defined as a positive feedback, मतलब तारीफ करना. So like कोई काम किया तो उसकी positive feedback हो, so that's praise, right? Respect is दूसरे लोग तुम्हें admire करें, ठीक है ना, people seek you out, so that's respect. It's a bit different than recognition, because recognition is kind of making you feel कि जो तुम काम कर रहे हो वो फजूल नहीं जा रहा. It is actually given importance. So you can kind of understand recognition by uh, being given importance for the efforts that you put in. So that's recognition. Respect is being admired and looked up upon by the people you work with. And praise is getting a positive response out of the things that you do. Empowerment is being able to make your own choices, right? Uh, for example, like you are made to feel like you have a certain say in the things that you do, like थोड़ी सी flexibility कर सकते हो, you can show your own creativity. Like for example, you don't have to do everything by them, you can put your some input in them. So that's empowerment. And sense of belonging is that you feel that you are wanted in the company and people like you in the company, so that sense of belonging. So these are the type of reward that you can give out to people that don't involve money. You can praise people, you can respect, recognize, empower them, and give them a sense of belonging. All right. So the difference is, ठीक है ना, ये जो सारी चीजें, number four, one difference between them and the reward that involve money, right? Especially pay. जो पैसा वगैरह होता है, right? Pay is always promised. Contract के अंदर they tell you how much you're gonna get before you join the company, right? So pay is promised. These rewards, जो non monetary rewards होते हैं, these are never promised. मतलब contract में लिखा हुआ नहीं होता कि you will be given respect, because it is understood that you have to earn respect. So ये शुरू से promise नहीं किए जाते. I'm not saying they're not important. I'm just saying ये शुरू से promise नहीं किए जाते. So that's one difference between pay and this one. Number two. Number two क्या होता है कि there are certain uses for this. For example, okay, number two, okay, this is gonna save company a lot of money, ठीक है ना? So this is gonna be comparatively cost effective than the types of reward system or rewards. क्योंकि respect देने में एक comment pass करना होता है, right? Recognition देने में चलो आप क्या कहते हैं, give them a shield, right? Empowerment करने में you give them the authority to make their own choices.
प्रेस के अंदर इट्स ऑल्सो वर्बल, या तुम लेटर लिख के दे दो, ठीक है. सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस के अंदर यू इनवाइट पीपल टू ग्रुप सेटिंग्स, सो इट डजंट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी. एज आई सेड, ठीक है ना. रिकग्निशन के अंदर यू कैन लाइक गिव देम अ शील्ड वगैरह, या you can congratulate them in person वगैरह. It can be done both ways. So does this work or not? Well, Brown and Armstrong ने research की थी, ठीक है ना. And turns out, ठीक है ना, कि employees rated recognition as the most important reward in their company. And जहाँ पे ज़्यादा recognition होती, people are ज़्यादा satisfied with their job. Salary is at the way end. So like you can use the research as well, recognition, yeah, non-monetary type of rewards, even though they're not promised, but matter most to people as compared to monetary rewards. You can think of it this way: everyone can get money, right? Everyone will get paid regardless of what they do, but special people will get these type of rewards. So it's kind of sets you apart from other people. It kind of makes you feel special. That's why I guess people like these type of things more than monetary rewards. So that's why it's more effective. तो CIA के अंदर क्या करना होगा, अगेन इन तुम्हें पांचों की बेसिक डेफिनेशन देनी होगी, जैसे तुमने प्रीवियस सेक्शन के अंदर इन चारों की बेसिक डेफिनेशन दी थी. So, और क्या करता मैं. सो इन टर्म्स ऑफ इवेल्युएटिंग देम, राइट, बोला था मैंने कॉस्ट इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू दी अदर टाइप ऑफ रिवॉर्ड सिस्टम्स. इट इज क्या कहते हैं, एप्लीकेबल if you use this research, के people kind of value it more. um, is it क्या कहते हैं, individual situational? I would say that this could be individual because some people prefer this, some people may not prefer this, some people prefer something else. So for example, let's suppose a senior person, ठीक है ना, uh, has respect, right? So he would prefer कि हर सेटिंग में उसको रिस्पेक्ट दी जाए. बट इफ अ जूनियर पर्सन कम्स इन, ठीक है ना, उसकी वैसे रिस्पेक्ट नहीं है, तो ही वोंट माइंड कि अगर उसको रिस्पेक्ट नहीं दिया. एक्चुअली ही वुड माइंड इफ ही डजंट गेट पेड. सो हर किसी के शायद अपना प्रेफरेंस होता है, मे बी. क्या कहते हैं, इंडिविजुअल सिचुएशन हो गया. इज इट रिडक्शनिस्ट? वेल, आई वुड से it is reductionist in the sense that it is considering only non-monetary rewards, ठीक है ना. And also it is also considering, if you think about it, these are again external motivators, क्योंकि ये सब चीज़ें ना तुम्हें खुद नहीं, तुम अपने काम करने से नहीं मिलेगी, तुम्हें जब कोई और देगा फिर महसूस होगा. सो तुम कह सकते हो कि these are also type of extrinsic rewards. फर्क ये है कि इनमें पैसे नहीं लगे हुए, और ऊपर वाले में पैसे लगते हैं. पर यहाँ पे कोई इंटरनल या इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स का कॉन्सेप्ट नहीं. तो दैट्स व्हाई आई फील कि इट इज रिडक्शनिस्ट बिकॉज it doesn't account for intrinsic motivators. Is it culture bias? Well, I would say it could be culture bias because in some cultures, respect could be valued more uh, than money. In some cultures, जैसे sense of belongingness could be valued more. As in, for example, like जो collectivist culture होते हैं, वहाँ पे like people wanna feel welcomed, भले उनको पैसे ना मिले. या इन सम कल्चर्स, ठीक है ना, जो कलेक्टिविस्ट कल्चर होता है, दे डोंट वांट एम्पावरमेंट, बिकॉज एम्पावरमेंट का मतलब है कि एन इंडिविजुअल विल हैव ग्रेटर प्रायोरिटी देन द ग्रुप. सो सर्टन कल्चर्स के अंदर एम्पावरमेंट पसंद नहीं करते. दे डोंट वांट to make their own choices, they want the group to make the choices as a whole. So किसी कल्चर के अंदर differences आ सकती हैं as to which type of non-monetary rewards matter the most or is more effective. So that could be a cultural difference as well. Bharat, so yeah, that's it. So there's this another research by Johnson Dixon, ठीक है ना, ये हुआ था 2010 में. So there's this year. So basically what they're doing is they're looking, do these recognition system work? क्योंकि employee of the month is sort of a recognition system. So do they work or not? So their conclusion is employee of the month, they do improve performance of the employees, so that's an advantage. It does work, but इसके negative consequences भी आ सकते हैं, because कुछ लोग क्या unhealthy competition की तरफ चले जाएंगे.
And when unhealthy competition happens, यहाँ पे क्या होता है, instead of getting their job done, people actually invest time, effort and money in sabotaging other people's effort, ताकि दूसरे उनसे आगे नहीं बढ़ सके. So instead of doing job, they try to sabotage each other. And इससे ultimately क्या होता है, the organization itself suffers, क्योंकि फिर कोई progress नहीं होती and कोई productivity नहीं होती. So employee of the month, ठीक है ना, does improve performance, but it could lead to unhealthy competition as well. So it's a double-edged sword. फायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं. So yeah. And this completes your entire chapter one for organizational psychology. Mm, Questions regarding this section or the entire chapter? All right. Regarding the questions that you solve, ठीक है ना, evaluation वाला question जो होता है, summary वाला question होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि इस चैप्टर के से रिलेटेड, लाइक द बेसिक आइडिया ऑफ इट, उसमें कोई सब मसला है, लाइक बेसिक आइडिया ऑफ हाउ टू सॉल्व इट. ऑलराइट. मैंने तुम्हें डिजाइन एक्सपेरिमेंट वाले सवाल के अंदर वो साइकोलॉजिकल मेथोलॉजिकल एविडेंस समझा दिया था, जो लाइक जो एक्सपेरिमेंट डिजाइन करते हो, राइट, उसके उसका जो पार्ट बी होता है, लाइक डिस्कस द साइकोलॉजिकल एविडेंस एंड द मेथोलॉजिकल एविडेंस इन द रिसर्च यू प्रोवाइडेड अब, लाइक द साइकोलॉजिकल एंड द मेथोलॉजिकल एविडेंस जो रिसर्च वाले डिजाइन वाले क्वेश्चन के पार्ट बी में जो आता है. और ठीक है, हो गया 10 का, ठीक है. और so now what we're gonna do is we're gonna start our next chapter, ठीक है ना, that is leadership. So leadership is gonna be our second chapter. और तो leadership के अंदर भी 3 sections होंगे, ठीक है ना, and the sections are divided in this way. The first section is all about how do you define leadership, leadership होती क्या है, and there are different theories के leadership किसको कहते हैं. The first section is entirely all about that theories के, like leadership कहते किसको है, how do you define leadership and etc etc. uh, Second theory is what type of leaders are there. So the second section is about the different type of leaders that you have and the theories about those types. And जो आखिरी में आता है, the last part is about the types of followers that you have. You cannot have a leader without the followers. The followers give you theories in. So first section, what is actually leadership? Second section, the types of leadership, and the third section, the followers that you have with the leaders. The first section again, there basically, what do you, how do you define leadership? What is leadership in its practical sense? So the very first theory that you have in this section is known as the great man theory. ठीक है? You can also say इसके दूसरा नाम universalist theory, right? Doesn't matter. So great man theory basically says this one thing: leadership, you are born with it, you're not made. So either you're born a leader or you're not a leader. तो लीडर पैदा होते ही लीडर्स होते हैं, उनके अंदर कुदरती तौर पे इनेट क्वालिटीज होती हैं, ठीक है ना, कोई बाद में जाके किसी को लीडर नहीं बना सकता. सो लेट्स सपोज लाइक ये वर्ड्स ने कॉन्सेप्ट दिया था 1913 में. तो ही सेज के लाइक नेपोलियन, अलेक्जेंडर, व्हाटएवर, हुएवर, ये सब पैदाइशी लीडर थे, ये इनको किसी ने सिखाया नहीं लीडर कैसे बनना है. सो यहाँ पे ऑलरेडी यू कैन फील कि यहाँ पे नेचर नर्चर में से नेचर का कॉन्सेप्ट ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पे नर्चर को मानते नहीं कि यू कैन नॉट टीच समवन टू बिकम अ लीडर. सो इट्स वेरी नेचर ओरिएंटेड. So individual situational, again, it's gonna be individual because it is the individual who is born with certain things that makes them a leader. Situation does not teach them. Situation का कोई कमाल नहीं है यहाँ पे. It is the individual who is born with certain things that makes them a leader. ठीक है ना? So it's individual. uh, is it deterministic? Yes, क्योंकि either you're born with it or you're not. तुम
So you cannot control what you're born with or what you're not born with. So it's completely deterministic. यहाँ पे free will का concept नहीं है. You cannot decide yourself कि तुम्हें leader बनना है या नहीं बनना. It was decided before you were even born. So that's why it's deterministic. Um, or concept like individual situational nature nurture determines the free will reductionist. Well, reductionist का point अभी discuss करने से पहले one thing you need to clarify जो मैं बार बार बोलूँगा कि leaders are born, they are not made. And I said कि leaders are born with something. So before going into reductionists, we have to discuss what are they born with. What is the something that they're born with that makes them a leader? So to expand this theory, ठीक है ना, मुझसे पूछा कि भाई leaders जो जिन चीज़ से पैदा होते हैं किस चीज़ से पैदा होते हैं. So what says कि भाई leaders are born with two things, charisma या transformational leadership skills. Charisma is the first one, and transformational leadership skill is the second one. So we're gonna discuss uh, charisma क्या होता है. So Woods ने Woods did not kind of Woods did not give the basic definition what charisma is because it was 1913. So charisma का जो definition है basically is given by Greenberg and Barron. But please understand कि अभी तक इसी theory की बात हो रही है. इसको थोड़ा expand किया गया कि भाई charisma क्या होता है. So charisma, according to these people, are these five things. Basically, a person who is charismatic should have self-confidence, right? Should have self-confidence in them and should have confidence in their followers as well. As in, you cannot be charismatic if you don't believe in the people that you work with. Second is vision. uh, People should be able to think how to improve their circumstances. As any like they don't want to progress, they should be progressive. They should be able to think how to make their circumstance better. Extraordinary behaviors. Basically, people are charismatic अगर वो चीज़ करें जो दूसरों ने नहीं नहीं किया होगा. For example, I don't know, uh, like for example, like Qaid Azam, right? For example, people say he's charismatic because he came up with the idea for Pakistan, right, where no one else thought it could be possible. Like he kind of made people believe. So like he had this extraordinary behavior that like believed that he can have a separate country wala scene hai. So that's extraordinary behavior. Recognition as change agents. They don't say things, they also do things, they make things happen. Environmental sensitivity इसका ये मतलब है कि uh, they can do so many things while having little resources. क्योंकि having many resources and doing many things is normal, right? इसमें कोई कमाल की बात नहीं है. Charismatic leader के लिए like people get wowed, like people like like get amazed if you do so many things with little resources. So that's charismatic. मतलब मिसाल के तौर पे like you defeat a large army while having smaller number of men. Yeah, you were poor, then you slowly like you got popular and successful. So इस तरीके से like क्या कहते हैं इसको inspiring resourcefulness कह सकते हैं इसको. So these all five things make charisma. And Wood says कि ये तुम इससे पैदा ये तुम्हारे अंदर पैदाइशी होती हैं, ठीक है ना, ये तुम्हें कोई सिखाता नहीं है. Second is the transformational skills. So transformational skills क्या होते हैं? ये ग्रीनबर्ग एंड बैरन ने डेफिनेशन इसकी नहीं दी, ये रेगियो ने डेफिनेशन दी इसकी 1999 में. And this name you're going to be hearing him a lot. He's going to pop up in many different chapters क्योंकि ये organizational psychology के लिए famous है. So how do you define transformational skills? Transformational skills is number one, you want people to change, right? That's why you have the word transformational. So if you want people to change, you have to demonstrate the change yourself. So like practice what you preach. Because if you want to bring the change, you have to show the change yourself. Number two, identifying and articulating a vision. As in, you need to identify what you want to change, right? So that's forming a vision. But number two, you need to tell people what you want to change too. कि बहुत सारे लोग हैं जिनको पता होता है कि करना क्या है, लेकिन they struggle to explain it to people, right? And if they struggle to explain it to people, लोग फिर motivate नहीं होते हैं. People get confused while the person is telling them what they want to change. These type of people have a special ability जो they can actually put in words what they're thinking.
so they can articulate what they're thinking, how to change things, and the way they put it into words, it excites people. So people kind of get ready to change for them when they hear what they have to say. और ठीक है, फ्रॉम द स्टार्ट कोई मसला नहीं है. करिश्मा समझ में आ गया. All right. So transformational skills, charisma is like being charisma. Some social is like having some style, your personality, like being someone special. That's charisma. Transformational skills can there is more about being able to change the people that you want to lead. You change the circumstances of the people that you want to lead. You want to bring that change. Charisma can that change nahi late. Charisma can you like you inspire people. Transformation can you change people. So what sort of skills that should you have if you want to change people? So transformational skills, region की definition दी थी, right? So a leader can be transformational if number one, they are an appropriate role model. Matlab, you want to bring a change, right? So if you don't practice what you preach, let's suppose you are making people say कि तुम्हें कचरा नहीं फेंकना, but if you yourself are throwing wrapper तो मसला होगा. So you should practice the change that you want to bring in the people. Take an example of the prophets, मतलब नया religion rather, right? तो अगर वो practice नहीं करते उनके सामने लोगों को समझ में नहीं आता. So practicing what you preach is the first step, number one, if you want to change people. Number two, identifying and articulating a vision. इसका क्या मतलब है? See, many people are able to uh, create an idea कि मुझे क्या change लाना है. Many people are able to think this, right? सोच सकते हैं. But many people cannot explain people what they want to do. बहुत सारे लोग struggle करते हैं अपने thoughts को words में लाना, right? तो इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को अगर आप जब अपना आइडिया समझाने लगते हैं, पीपल डोंट अंडरस्टैंड देयर आइडियाज बिकॉज उनको अच्छी तरीके से समझाना नहीं आता, क्योंकि अल्फाज में ट्रांसलेट नहीं कर सकते अपने सोच को. दीज पीपल डोंट स्ट्रगल विद दैट. These people have an ability to put their thoughts into words, put their ideas into words. So when they tell the people कि उनको exactly क्या change लाना है, the leaders, the transformation skills वाले लोग, they are able to do it in such a manner कि लोग सुनते ही उससे इंस्पायर हो जाते हैं. यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ मार्टिन लूथर किंग, Malcolm X, like जो अपने speeches दे के लोग को इंस्पायर करते थे. So these people are very good at putting their thoughts into words, and that's why people kind of get ready to change for them. Maintain high performance expectations. See, if you don't maintain high performance expectation, agar if you're mediocre, right? Yeah, if you're average, you don't want to change. क्योंकि change का मतलब होता है कि you want to step up, you want to advance, you want to upgrade. So if a leader wants you to upgrade, he would expect कि लोग अपना best दें. People give more than they used to previously. So इससे क्या होता है? People kind of give their best. Keep people always do the 100% so that they can accomplish the things that they never got before. Because यहाँ पे change लाने की बात हो रही है. Providing individualized support का मतलब है कि you should know who you're working with, you should know every person that you're working with, and you should show them concern for every single person because you want to change people, right? And you cannot change people if you don't care for people. That's why you need to show individualized support. हर एक के पास अलग से जाना पड़ेगा. Providing intellectual stimulation. See, people won't change if you don't change how they think. You get thinking leads to behavior. So if you don't work on how people think, they're gonna do the same thing over and over and over again. For example, यहाँ पे different roads बनते हैं, different traffic laws pass होते हैं, right? But doesn't change the way how we think. So we keep doing those violations over and over and over again. जब तक हमें कोई बिठाएगा नहीं, like सिखाएगा नहीं बकायदा, or it won't change how we look at things, how we read, how we think things, we won't change them. So ये leader जो है, they work on changing the people's thinking process as well, so they can be ready to get changed. So all of this combined makes a person transformational. And Woods कहता है कि
जो लीडर जिस चीज़ से पैदा होता है ना, ये दो चीज़ों से पैदा होता है, ठीक है ना, एंड ये आप सीख नहीं सकते। अगर आप पैदाइशी ये चीज़ें रखते हो, गुड, योर लीडर। अगर आपके पास पैदाइशी दो चीज़ें नहीं है, टू बैड, यूर नॉट अ लीडर। सो दैट्स व्हाट ही मीन्स। एंड इज इट रिडक्शनिस्ट? वेल, in my view it could be reductionist, क्योंकि यहाँ पे the qualities he's focusing on are very very few. There could have been other qualities that he does not focus on, such as empathy, such as क्या कहते हैं, emotional intelligence, social intelligence, general intelligence. He basically I would say it is only considering very few traits. So that's why it is reductionist in my view. But so it's too reductionist, too deterministic, right? Strengths क्या हो सकती है कि whatever Wood says, right, it kind of still makes sense. Okay, if you look at people who are leaders, right, they do have those characteristics. Like you cannot deny that, like जो भी memorable leaders गुजरे हैं, they were not charismatic, yet they were not transformational. They were both of them. So it would could mean that Woods was right about some of his theory. So he is right about some of the leaders. So that's why it's a strength. Weaknesses क्या होंगे? See, in an organization, right, I अगर से जब हम organizational psychology पढ़ते हैं, so उसके अंदर, right, we also think about how to make our employees better as well, ठीक है? तो लीडरशिप के अंदर जब तुम ये पढ़ोगे, right, you should think about क्या मैं अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज डाल सकती हूँ। जब तुम ग्रुप बिहेवियर वाला सेट पढ़ोगी चैप्टर, यू शुड थिंक अबाउट क्या मैं अपने एम्प्लॉयज़ को बेटर टीम वर्कर्स बना सकती हूँ। सेफ्टी के चैप्टर के अंदर यू शुड थिंक अबाउट क्या मैं अपने एम्प्लॉयज़ को सेफ वर्क करने में सिखा सकती हूँ नहीं। So let's take this theory, great man theory, Joe. Like if you're born, you're not made. So if he is true, right? If he is really, really true, इसका ये मतलब है कि we cannot teach our leaders to be employees to be a leader if they're not born. तो इसका ये मतलब होता है कि जो डिफरेंट चीज़ें आती हैं, तुमने देखा होगा कि मैनेजमेंट ट्रेनी प्रोग्राम्स या ट्रेनिंग्स होती हैं, ठीक है ना, जहाँ पे लोग को ट्रेन करते हैं लीडर्स बनने में, या स्पेशल कोर्सेज होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, ठीक है ना, 2 डे वर्कशॉप ऑन लीडरशिप वगैरह वगैरह वगैरह। इसका मतलब है वो सब तो काम नहीं करते, ठीक है ना। बट बट चूंकि कंपनीज बाकायदा ट्रेनिंग करवाती है लीडर्स बनाने में, इसका मतलब होता है कंपनी फिर वाकई यकीन करती है कि आप लीडर बना सकते हो। सो इफ अ कंपनी डज दैट, दिस इज डायरेक्टली गोइंग अगेंस्ट व्हाट वुड स्टेटेड। इसका ये मतलब है कि वुड्स इज देन रॉन्ग। सो दैट्स द डिसएडवांटेज फॉर वुड्स थ्योरी अबाउट लीडर्स बीइंग बोर्न नॉट मेड। यहाँ तक कोई मसला? All right. So that's the first theory, the great man theory. So leadership is gonna be defined in terms of charisma and transformation, according to Woods. Second theory, अच्छा ये behavioral मतलब it's not the वो वाला behavioral जो behavioral approach होता है, यहाँ पे थोड़ा मतलब कुछ और है. The second theory is gonna be a behavioral uh, characteristics of leadership, as in Woods कहता है कि the ideal leader should have transformational charisma. सही है, साइड पे डालो. यहाँ पे we're going to talk about the ideal behavior of the leader. ठीक है, instead of traits, right, instead of personality qualities, क्या can we define a leader in a way in which we can highlight his ideal behaviors rather than his personality traits? So if yes, कौन से ऐसे behavior show करने चाहिए leader को to be known as an effective leader, as in what behavior should they show regularly? तो इसके लिए एक स्टडी होती है, क्योंकि अभी तक पता नहीं है कि कौन से बिहेवियर कंसिडर करेंगे देर आर लीडरशिप वर्दी। तो इस स्टडी के लिए दो यूनिवर्सिटीज एट द सेम टाइम रिसर्च करती है। एक रिसर्च हो रही होती है ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में,
एंड उसी टाइम दूसरी रिसर्च हो रही होती है मिशिगन यूनिवर्सिटी में, राइट, कहाँ गया, या मिशिगन में. सो दीज टू यूनिवर्सिटीज वांट टू फाइंड आउट कि यार जो लीडर्स होते हैं व्हाट बिहेवियर्स शुड दे शो. सो ओहायो यूनिवर्सिटी एक स्केल निकाला जिसका नाम है LBDQ, लीडरशिप बिहेवियरल डिस्क्रिप्शन क्वेश्चनर. ये क्या करता है कि पार्टिसिपेंट को एक पूरा क्वेश्चनर बांट दे एंड डिफरेंट सिनेरियोस देते हैं, ठीक है ना, कि क्या लीडर को ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या लीडर को करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या आप ये करते हैं कि नहीं करते. एंड पीपल आंसर ऑन ऑल ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम दीज 5 choices, ऑलवेज, ऑफन, occasionally, seldom and never. भारत. तो एंड दिस इज अ प्रैक्टिकल टेस्ट क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स uses it to find out the leadership qualities of their people. So it is used in military setup as well. So it is a legitimate test. तो इसका मतलब जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो वैलिड रिजल्ट आएगा. भारत. So Ohio University does this to find out the ideal behaviors of the leader. Same thing Michigan करते, but we don't know the name of the scale. So from the entire questionnaire, right, ओहायो यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चनर के अंदर दो बिहेवियर ऐसे आते हैं जो टॉप 2 के अंदर आते हैं. दो बिहेवियर ऐसे हैं जो टॉप में आ रहे होते हैं. मिशिगन स्टेट के क्वेश्चनर के अंदर भी दो ऐसे बिहेवियर आ रहे होते हैं जो टॉप में आ रहे होते हैं. मतलब दो बिहेवियर्स, वो ऐसे बिहेवियर जो हर किसी ने टिक किया होता है कि हर लीडर माना चाहिए, लाइक द मोस्ट प्रोमिनेंट रिस्पॉन्सेज. सो ओहायो यूनिवर्सिटी के फॉर्म के अंदर जो टॉप 2 बिहेवियर आते हैं लीडरशिप के, उसका नाम होता है इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर एंड दूसरे बिहेवियर का नाम होता है कंसिडरेशन. मिशिगन स्टेट के अंदर जो उनके फॉर्म के हिसाब से दो टॉप 2 बिहेवियर आते हैं जो लीडर को शो करनी चाहिए, उसका नाम है टास्क ओरिएंटेड एंड रिलेशनशिप ओरिएंटेड या ओरिएंटेशन. भारत. इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है. इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर का ये मतलब होगा, फर्स्ट करो कि इफ आई वुड टू से इट इन सिंपल टर्म्स, आप लीडर वो लीडर जो काम को ज़्यादा अहमियत दे एंड दे वांट गेट द जॉब डन, ठीक है ना. सो देर गना फॉर्म गोल्स, टास्क बांटेगा लोगों के अंदर, टीम बनाएगा, डेडलाइन रखेगा, ठीक है ना. एंड ही इज गना मेक श्योर 100% के टास्क कंप्लीट होगा विद इन द टाइम फ्रेम, ठीक है ना. ही विल नॉट केयर चाहे बंदा मर गया हो, ही इज गना गेट द जॉब डन. सो दैट्स इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर. इसका ऑपोजिट कंसिडरेशन है. कंसिडरेशन क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग मोर ऑन अ टास्क, कभी कभी लोगों का भी ख्याल रखना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल लोग से ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना एंड लोगों का कॉन्फिडेंस वगैरह बूस्ट करना, ठीक है. सो फॉर्म के अंदर दो टॉप बिहेवियर आए, या तो लीडर ये शो करे या तो लीडर ये शो करे. मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो ये जो दो आए, टास्क ओरिएंटेड, रिलेशनशिप ओरिएंटेड, नोटिस करो मैं ये डिस्क्रिप्शन दोनों के अंदर सेम रखे. फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि भाई मिशिगन यूनिवर्सिटी एंड ओहायो यूनिवर्सिटी जो है डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज़ करता है. टास्क ओरिएंटेड मिशिगन का इस टर्मिनोलॉजी है, ओहायो का इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर टर्मिनोलॉजी है, लेकिन दोनों के मतलब सेम है. डिफरेंट टर्मिनोलॉजी क्यों, क्योंकि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज है और डिफरेंट फॉर्म्स थे. लेकिन कमाल की बात है कि दोनों यूनिवर्सिटीज ने एक सेम टाइप ऑफ बिहेवियर्स फाइंड आउट किए एट द सेम टाइम. सो इन दोनों रिसर्चेस को मिला के पता चलता है कि in terms of what type of behavior should a leader show, according to the two universities, ओहायो की तरफ जाओ तो ये दो बिहेवियर शो करना चाहिए लीडर को, मिशिगन की तरफ जाओ तो ये दो बिहेवियर शो करना चाहिए लीडर्स को. डेफिनेशन में कोई फर्क नहीं है, टर्मिनोलॉजी में फर्क है. सो behavioral view of leadership, a leader should be either task oriented or relationship oriented. So that's the answer to this question. So about this theory, अगर हम इसको evaluate करें, I'm still gonna say कि it is gonna be culture bias, क्योंकि पहली बात ये कि ये दोनों रिसर्चेस अमेरिका के अंदर बेस्ड है एंड जो लोगों ने रिस्पॉन्सिव फिल आउट किए वो भी अमेरिकन से और अपने कल्चर के हिसाब से करेंगे. मे भी हो सकता है कि किसी और कल्चर के अंदर आप ये फॉर्म बांटते तो क्या मतलब टॉप बिहेवियर्स ऑफ लीडर्स अलग आते. फॉर एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ दिस यू माइट हैव फॉर एग्जाम्पल रिकन्सिलिएशन, लाइक फटने सुलझाना, ठीक है, और रिप्रेजेंटेशन के भाई हमें अच्छा रिप्रेजेंट करे लोगों के सामने. बट दीज वर नॉट चोजन बाय द पीपल. जो टॉप 2 आया था, ये आया था और ये आया था.
So different cultures could have different ideal behaviors of leaders. So that could be a culture bias aspect. Is it applicable? It is applicable because the U.S. Air Force uses it. Number two, क्या कहते हैं, is it individual situational? It is completely individual क्योंकि यहाँ पे individual की behavior की बात हो रही है, right? कि कौन सा behavior leader को show करना चाहिए, यहाँ पे कोई situation की बात नहीं हुई. So these are individual based results. नेचर नर्चर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बात ही नहीं हो इसकी. डिटर्मिनिस्टिक फ्री विल की बात भी फिर यहाँ पे नहीं आएगी क्योंकि बात ही नहीं है इसकी. Is it reductionist? In my view, it is reductionist क्योंकि a leader could show more than these two behaviors, right? मतलब कोई ना कोई बीच में ग्रे एरिया होना चाहिए. सिर्फ ये और ये नहीं हो चाहिए क्योंकि आई फील कि ये एक ऑपोजिट एंड है और इसका ये बिल्कुल इसका ऑपोजिट एंड है, कोई बीच का रास्ता नहीं है, ये और बिहेवियर्स नहीं है. सो सेइंग that these two behaviors are the ideal behavior that the leaders should do and nothing else is a bit reductionist. There could be more behaviors that a leader could perform लेकिन वो नजर नहीं आया. So hence it is reductionist in my view. um, और क्या होगा? mm, yeah, I guess that's it. So like that's how I would evaluate it. Oh yeah, one strength is that kid. See, these two universities did the same study in the same time. So like we can say कि यार जो ओहायो का रिजल्ट है ना, मिशिगन यूनिवर्सिटी कंफर्म करता है, मिशिगन का रिजल्ट ओहायो यूनिवर्सिटी कंफर्म करता है कि व्हाट द चांसेस कि दोनों यूनिवर्सिटी के रिजल्ट सेम आए. तो इस बेस पे कह सकते हैं यार इनके जो रिजल्ट्स होंगे मतलब कुछ ना कुछ लेजिटिमेसी या वैलिडिटी रखते होंगे क्योंकि दोनों ने सेम रिजल्ट्स निकाले. तो दैट्स व्हाई लाइक द थ्योरी इज समवट वैलिड. पूरी तरह नहीं होगा बट समवट है. सो दैट इज द बिहेवियर व्यू ऑफ लीडरशिप. यहाँ तक कोई सवाल? और वी हैव टाइम फॉर वन मोर फिर हम कंक्लूड करेंगे. Okay. Yeah, I think yeah. Okay. So the third theory is adaptive leadership. हाईफेल्ट्स, ठीक है ना, हाईफेल्ट्स कहता है 97 के अंदर एन आइडियल लीडर इज द वन हु इज अडेप्टिव, जो लाइक हालात के हिसाब से अपने आप को चेंज करे, राइट. उससे जो पुराने दो थ्योरीज हैं, द यूनिवर्सलिस्ट थ्योरी, ये ऐसी बात नहीं करते. वो हालात के हिसाब से बदल देने वाला कॉन्सेप्ट रखते ही नहीं है. ओहायो वाला, मिशिगन वाला वो भी नहीं कहते हालात के हिसाब से बदले. सो दिस इज द फर्स्ट थ्योरी दैट टॉक्स अबाउट a leader being adaptive uh, to the surrounding situations. So Heifetz कहता है leader should be adaptive. If we go in depth into his definition, ठीक है, why do leaders need to adapt? क्योंकि basically different situations के लिए different क्या कहते हैं qualities चाहिए होते हैं. अगर लीडर चेंज नहीं होगा ना, जमाना बदलता भी है तो आपको लीडर हटाना पड़ेगा ताकि उस हिसाब से नया अच्छा लीडर है. हाइफेट्स कहते हैं if the leader needs to survive this, the leader needs to change as well, and that's what makes a good leader. So cutting the long story short, ठीक है, हाइफेट्स कहते हैं कि then there's two types of leaders, जो ट्रेडिशनल होते हैं एंड अडेप्टिव होते हैं. And I feel that the best way to understand organizational psychology is apply it on your family. Because your family is the closest organization that you have. So think of your family having a leader. ठीक है ना? There might be traditional leaders in your family, and there might be adaptive leaders in your family. And let's suppose कोई ना कोई family event आता है, right? So obviously family event के अंदर कोई ना कोई leadership role assume करेगा. So like traditional example, like family के अंदर marriage होती है, right? So like their type of traditional leaders, जो like they have all the say about them कि family के अंदर किसको, like who is allowed to marry who and who is not allowed to marry who. So these are traditional leaders. They give the authority, right? They have all the power, right? So their say is the final say. So traditional leaders like to have all the authority and order people around. Adaptive leaders don't like to do that. They kind of ask people कि तुम क्या सोचते हो, make your own decisions. So that's the first difference. Traditional leaders, number two, try to maintain the rules.
maintain the norms कि हमारे यहाँ ऐसे ही होता है और हमेशा ऐसे ही होता रहेगा. Adaptive leadership doesn't believe that. Adaptive leadership tries to change जो जमाने के हिसाब से बेहतर लगे. ठीक है. ट्रेडिशनल लीडर्स क्या करेगा अगर कोई ना कोई मुश्किलात आती हैं, सो ही वुड थिंक इन टर्म्स ऑफ हम वो चीज़ करेंगे जो हमें आता है. ठीक है. वी वॉन्ट डू वट वी डोंट नो. फॉर एग्जाम्पल, because they believe in traditional knowledge, so they will use the knowledge that they have. Adaptive leaders क्या करेंगे, they won't think in these terms. ये सोचेंगे ठीक है हमें जो नहीं आता वो सीखते हैं फिर उस चीज को करते हैं. So like they want to progress, they want to learn new skills so they can do more things. Traditional leaders, they don't want to learn new skills, they want to do what they can do and not do what they cannot do. Traditional leaders then henceforth will do what they did in the past. जो चीज करते रहे हैं, if it worked they will do it again. भले इनको कोई और चीज समझाने की कोई कोशिश करे, they are still gonna do it. uh, for example, you can think your family के अंदर कोई medical emergency आती है, right? They go to that doctor. Every single family person go to the same doctor. अगर एक खानदान का होता है, क्यों? क्योंकि उस डॉक्टर ने मेरे इसको सही किया तो इसको भी सही कर देगा. Adaptive leaders वाले लोग मतलब they will try to find other doctors या other hospitals uh, by going online. So they will try to find new solutions. Traditional leaders, ठीक है ना, and adaptive leaders. Heifetz does not say कि traditional leaders बुरे हैं. Heifetz says कि adaptive leaders are more क्या कहते हैं capable when the times are changing. Heifetz would never ever need to go to an adaptive leader अगर हालात सेम रहते हैं. मसला क्या है कि हालात अगर सेम रहते हैं ना, ट्रेडिशनल लीडर्स हम हमेशा खुश रहते हैं. हाइफर्स कहते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली चीज़ें चेंज होते रहती हैं. दैट्स वाई उस चीज़ के हिसाब से अडेप्टिव लीडर होना लाजमी है. एंड जब चीज़ें चेंज ना हो तो हमें अडेप्टिव लीडर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली वाई वुड नीड टू चेंज थिंग्स इफ थिंग्स आर वर्किंग फाइन. सो दैट्स वेयर ट्रेडिशनल लीडर्स आर गुड. बट क्योंकि यहाँ पे हालात चेंज होते रहते हैं, सो वी नीड टू चेंज. दैट्स वाई अडेप्टिव लीडरशिप का भी आना लाजमी है. सो this is what his entire theory is about. He is not against traditional people. He is just saying कि हालात बदलेंगे, so you need to change as well. So there are 6 things that a traditional leader should do in order to change. And उसके 6 principles हैं. Number 1 is get on the balcony. Like that's the exact principle का पूरा नाम है, get on the balcony. इसका ये मतलब है कि rather than being involved in the situation, take a step back and look at the situation दूर से जाके. क्योंकि if you want to find out what's wrong, right? हो सकता है कभी कभार मसले के अंदर फंस के मसला समझ में नहीं आएगा. Like you were able be able to understand the problem if you take a step back and look at the entire picture from a distance. So that's what get on the balcony mean. If I take a step back and then look at the entire picture so that you can exactly find out what is wrong and what you need to change. Second principle is identifying the adaptive change. Again, ये उस वक्त होगा if you take a step back. So if you take a step back, then you need to find out what needs to change. Number 3 is regulate distress. See, so if you find out what needs to change, you will change it because you need to change it. So there might be some people in your organization that don't want to change because resistance आएगी. If you make the change too difficult for them, right? बहुत मुश्किल है. They're gonna resist. They'll never change. If you make the change too easy for them, right? They're not gonna take it seriously. तफरी में लेंगे. So you wanna kind of find the middle ground. कि लोग को stressful लगे कि people think it is the real stuff. कि he's not joking around, but not too difficult कि लोग resistant हो जाए. You need to find the right balance to regulate distress. लोग को tension में डालो, लेकिन इतना tension में नहीं डाल कि लोग भाग जाएं. और इतना हल्का भी नहीं अपने आप को लाओ कि लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएं. Like kind of find the middle ground. So regulating distress. Number 4 is maintain disciplined action. इसका ये मतलब क्या होगा कि again, see, a leader is there to create change, and change will not happen जब तक
मसले सामने नहीं आएंगे. Certain people like to keep the conflicts covered up. मतलब क्या करेंगे, मसले को छुपाएंगे और डिनाई के मसला नहीं ही था. अडेप्टिव लीडर क्या करेगा, ही वोंट केयर अबाउट दैट. वो कहेगा लाओ मसला सामने, लेट्स हैव अ कॉन्फ्लिक्ट. सो if you don't have a conflict, मसले कभी हल नहीं होंगे, and then you will never change. So adaptive leader would try to have a conflict, ठीक है ना, would initiate conflict between people who have a problem, but uh, again within the boundaries, ठीक है ना, within like framework of ethics. मतलब किसी के साथ personal नहीं होगा, like there would be discipline action, लेकिन वो maintain होगा. So leader will initiate conflict so that he can address them. उसके बाद give the work back to people. Again, make people confident enough कि they can make their own choices. हर चीज के लिए तुम्हारे पास ना है, कुछ ना कुछ चीज वो अपने आप से अपने like they can solve on their own. So give them more responsibility, give them the ability to solve their own problems without them coming to you repeatedly bar, so that you can do your work in peace, and so that the people can also do their work in peace independently without bothering you. Number six is protect the voices of leadership from below. Again, देखो कंपनी के ना मसले होंगे तो you need to change that मसला, right? And you are gonna be able to change it जब तुम्हें मसला पता चलेगा, या तो तुम्हें कोई आके मसला बताएगा. दो तरीके से तुम्हें मसला पता चलेंगे, या तो तुम्हें खुद पता चलेगा या तुम्हें लोग आके बताएंगे. अगर लोग तुम्हें आके मसला बताएंगे ना, और तुमने सबके सामने बता दिया कि ये बंदा आ रहा था मुझे मसला बताने के लिए, यू काइंड ऑफ exposing his identity, right? अब क्या होगा, if you do that once, no one will highlight the problem to you. तुम्हें कोई मसला बताने नहीं आएगा क्योंकि they know कि this person is going to disclose our identity. So protect the voices of leadership from below का मतलब ये कि whoever is coming to you with a problem, keep them confidential. नहीं बताओ लोगों को. So तुम्हारे पास मसले आते रहे लोगों के, और जो लोग मसले ला रहे हैं वो किसी और से टारगेट ना हो, क्योंकि अगर तुमने एक्सपोज कर दिया उसको, obviously he's going to get targeted by the people, so you don't want that. So that's what protect the voices of leadership from below means. So Heifetz कहता है कि you need to do 6 things in order to be a effective adaptive leader. If you don't do it, you won't be able to bring a change. You're not an adaptive leader. So one of the things that his theory is again, it's too subjective, right? Again, there's no scientific evidence it works, but सारे के सारे theory जो है ना, universalist, great man, etc., they're too subjective, right? There's no scientific evidence. Weakness क्या होता है? Weakness is that adaptive leadership is going to work when things are uncertain. So it is not the leader that is going to choose the situation. एक तरीके से समझो, it is the situation that is going to choose the leader. कि हालात जब यूज अनस्टेबल है तो फिर उस वक्त अडेप्टिव लीडरशिप चाहिए होगा, जब वापस संभल जाए तो फिर अडेप्टिव लीडरशिप नहीं चाहिए होगा. तो लीडर कंट्रोल में नहीं है, द सिचुएशन इज इन कंट्रोल के कौन सा लीडर आएगा कौन सा लीडर नहीं जाएगा. दैट्स व्हाई इट इज डिटर्मिनिस्टिक इन माय व्यू. द लीडर डज नॉट हैव कंट्रोल, द सिचुएशन हैज कंट्रोल कि कौन सा लीडर आएगा कौन सा लीडर नहीं आएगा. स्ट्रेंथ्स क्या है कि जो हाइफर्स की थ्योरी है, राइट, बाकी जो थ्योरीज थे, ग्रेट मैन एक्सेट्रा, वहां पे लाइक इन्होंने बोल दिया कि ये एक चीज होती है, राइट, इससे आगे पीछे कुछ नहीं होगा. हाइफर्स के थ्योरी के अंदर ही डज अकाउंट के सिचुएशन चेंज होगा एंड उसके हिसाब से हमें चेंज होना चाहिए. बिहेवियरलिस्ट व्यू ऑफ लीडरशिप एंड ग्रेट मैन थ्योरी डजंट लुक एट सिचुएशंस, ठीक है ना, they completely focus on the individual. So that, like, this is the first theory that kind of considers the situation aspect as well. So individual situation can there, it is gonna be the situational side of the debate. Uh, it's gonna be deterministic, right? Is it nature or nurture? It is nurture. Because again, people can be trained to be adaptive, right? अगर nature होता तो this will never believe. अगर nature होता ना, this theory will never say that people can change. This will never talk about changing the circumstance. But because this believes in nurture, okay, you can develop people, you can change people. So that's why
adaptive leadership works. You can develop and change people. So this focuses on the nurture side of the lead because it talks about changing people. उसके अलावा क्या कहते हैं individual situational deterministic free will nature nurture reductionist. I would say it is not reductionist because principles के अंदर जो छह के छह principles हैं, it's basically covering the क्या कहते हैं the leader's perspective, the co-worker's perspective, ठीक है ना, and क्या कहते हैं resistance perspective, ठीक है ना, the conflict perspective, the responsibility perspective. So like it's kind of considering many things inside these principles. So that's why I would say high frequency theory considers many things at once holistically. So that's why it is holistic, not reductionist in my view. So यहाँ तक कोई confusion रमला? Deterministic point again, ठीक है. डिटर्मिनिस्टिक का मतलब होता है कि आर यू इन कंट्रोल और नॉट, ठीक है. तो यहाँ पे इज द लीडर इन कंट्रोल, क्योंकि इफ यू थिंक अबाउट इट द लीडर इज नॉट इन कंट्रोल, राइट, द सिचुएशन इज इन कंट्रोल. क्योंकि जैसी सिचुएशन सर्टन हो गई, you don't need an adaptive leader. जैसी सिचुएशन अनसर्टन हो गई, you need an adaptive leader. So if let's suppose there is an adaptive leader, ठीक है ना, सब कुछ मसला सही कर देता है and situation certain, now you don't need this leader, right? So basically it is a situation which kind of determines कि आपके पास कौन सा लीडर आएगा, ये वाला या ये वाला. So the leader does not have the option to choose himself. The situation is kind of determining what type of leader you need. So the situation tells you which type of leader you want. The leader does not tell you what type of situation you get. So that's why the leader is not in control of it. The situation is in control of the leader. So that's why it is deterministic in that regard. Uh, थोड़ा क्लियर करो. Alright. यहाँ तक कोई confusion in the all three theories that we discussed for leadership या उनकी evaluations के अंदर? All right. So like, what do you write about adaptive leadership? Again, great man theory के अंदर तुम्हें बताना है कि भाई वुड्स ने बताया था leaders are born not made. They're born with certain traits. तुम्हें बताना है कि ये trait क्या होता है and ये trait क्या होता है. That's the entire great man theory. इसका क्या करना है, तुम्हें बताना है कि भाई ओहायो और मिशिगन यूनिवर्सिटी ने कोई ना कोई रिसर्च की थी to find out the most demonstrated behavior of a leader. And these two universities have found that Ohio के हिसाब से ये दो लिखोगी, इनकी बेसिक डेफिनेशन. मिशिगन के हिसाब से ये दो लिखोगे, इनकी बेसिक डेफिनेशन. या तुम क्या कर सकते हो, ओहायो ये दो की टर्मिनोलॉजीज, मिशिगन ये दो की टर्मिनोलॉजीज, एंड इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर और टास्क कोऑर्डिनेट को तुम एक साथ डिफाइन कर सकते हो क्योंकि इनकी डेफिनेशन नॉर्मल है. बस तुम्हें ये बताना है कि मिशिगन की ये टर्मिनोलॉजी है, ओहायो की ये टर्मिनोलॉजी है. सो बस तुम्हें यहाँ पे सबसे मुश्किल काम क्या होता है, तुम्हें याद रखना कि कौन सी यूनिवर्सिटी का कौन सी टर्मिनोलॉजी है. उसके अलावा यू डोंट नीड टू मेंशन दी LDBQ क्वेश्चनर, यू डोंट नीड टू मेंशन दिस अदर. ठीक है, बस ये बताना कि टॉप टू बिहेवियर्स इनके हिसाब से ये है और इनके हिसाब से ये है. अडेप्टिव लीडरशिप के अंदर यू डोंट नीड टू टेल दी entire table, ये नहीं मेंशन करना. ऑल यू नीड टू डू is give a brief description of what you mean by adaptive leadership, and उसके बाद ये छह प्रिंसिपल्स की शॉर्ट डेफिनेशन बता देनी है. दिस इज द शॉर्ट डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज मेंट बाय अडैप्टिव लीडरशिप. ठीक है ना. इसके बाद अगर डिटेल आंसर चाहिए होगा तो तुम छह की छह प्रिंसिपल्स के एक एक लाइन की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दोगी. या यू आर सपोज टू एग्जैक्टली कोट व्हाट द प्रिंसिपल इज. प्रिंसिपल नंबर 5 का तुम्हें एग्जैक्ट वर्डिंग के अंदर रखना है, राइट. यू कैन नॉट पैराफ्रेज इट, एंड इसकी वन लाइन डिस्क्रिप्शन देनी है so that you can give the entire summary of adaptive leadership. You don't need to tell about this. So that's it. यहाँ पे कोई मसला?
All right, so there is a homework question. Homework question is uh क्या कहते हैं, discuss okay, evaluate the three theories of leadership discussed in class. एक चौथी theory भी रहती है, but we're gonna do that in the next class. So you have to evaluate whatever we have discussed today in terms of leadership. ठीक है, मसला तो नहीं. All right. ठीक है, I'm gonna end the class. I'm gonna hopefully check your quiz by tomorrow, give you a feedback. ठीक है, and yeah, the lectures is being recorded, so like I'll post it and they'll post it online. ठीक है रमला, see you. अच्छा अच्छा, hold on. I need to inform you जब हम class कब करते हैं, like is it Monday or what? uh, I forgot क्या सीन है यार. Oh yeah, see, so all right, so Monday को हमारे class, see Monday and Saturday, like ठीक है, तो like we'll have a class on Monday. All right, फिर I'm gonna sign off now. Office.